Hello, dear student. Once again, very good evening to all of you. So, welcome to our live answer writing session. So, today question is about the Finance Commission. So, the question is: Finance Commission has been called the balancing wheel of the fiscal federalism. Critically examine its constitutional mandate and emerging challenges that constrain its effectiveness. So, 15 marker question. So, you will have to write that into 50 words, 3 pages, and I'm going to give you 15 minutes today, okay? Because you are writing at the starting phase, so you should focus more on the content, quality of your answer rather than the time, okay? So please note down the question. I'll give you the timer, okay? So your time starts now. You can start writing, and I'll come back after 20 minutes. So exact 9. And please, after writing and upload all this question in our group. Write all your question, then make a scanned copy PDF and upload in our group. So I'll take few questions and evaluate here in front of you. Hello everyone. So hope you have written the question, answer of this question. Okay, so here you can see the Finance Commission is called as balance wheel of fiscal federalism and critically examine the constitutional mandate and emerging challenges that constrain its effective function. So here we are going to discuss about the challenges क्या क्या face कर रहा है and क्या उसका mandates है. So Finance Commission, you can also use your FC. If you are using after Finance Commission FC, then you can write entire answer as a FC. Okay. So after Finance Commission, you can use abbreviation. Constituted every 5 years by the President of India under Article 180. कि या नहीं हो सकता है under Article 280 of Indian Constitution, it provides for the Finance Commission. So that means your entry is under the BMW. So please start from article itself here. Okay. It's a quasi-judicial body primarily responsible for balancing of the fiscal federalism among the central state and to ensure cooperative federalism and economical stability. Very good introduction, but it should be little bit of less. Hardly it should not be more than 4 line. Okay, 4 line से ज्यादा नहीं होना चाहिए. कुछ चीजों को आप compress कर सकते हो because something you have to write in body also ना. So good, but keep it brief. क्या कर सकते हैं हम उसको ब्रीफ में रख सकते हैं. So constitutional mandate of Finance Commission. So 280 of Constitution of India provide for establishment of FC. Okay. Okay. Recommendations for, I think already you have written there, so no need to write here. Na? So it's a duplication. You can avoid it. Okay. So if you are writing something in introduction in body, no need to repeat. You need to explore new points. So recommend the distribution of uh, revenue between the union and states. Okay. So this is what called vertical devolution. Yes, this is very good. This is what called horizontal devolution. Yes, very good. A very good diagram. Yeah, but ये avoid repetition. Next is article granting art to the state from Consolidated Fund of India. Yes. So I think it's 275. I think granting art. Granting art given by एक बार cross verify please. I think it's 275 sir. 270. 275. Yes, 275. हाँ. प्लीज आर्टिकल गलत मत लिखना. वो बहुत अगर उसको समझ में आ गया ना फेंक रहे हो तो वो बड़े नेगेटिव लेते हैं. Fund for the Panchayat Raj and municipality from the consolidated. No. They will give suggestion. This point is also wrong. They will give suggestions to the state government to augment their consolidated fund of India to supplement the resource of Panchayat and municipality. थोड़ा सा you need to correct the points also. Factually incorrect. वो नहीं होना चाहिए. And consolidated fund of state. So emerging challenges, GST impact. Okay. You can देखो, you are writing lot of thing about GS.
GST, but question is not about GST. How GST is impacting the finance commission? देखो आपने पूरा GST के बारे में यहाँ तक बता दिया. Rather than that, you can say post GST implementation, states are losing their revenue. समझो देखो यहाँ मेन एजेंडा क्या है. वी हैव टू शो अबाउट द चैलेंज ऑफ फाइनेंस कमीशन. यू आर शोइंग here you have written this much point about GST. This is not demand. You have to focus more on post GST. State are losing their autonomy, so that is what create challenge for the finance commissions to balance. So they have to provide more funding to the state government. Okay. So next is rising surcharge. Yes, center have levy surcharge which cannot form the part of the form a part of the state pool or divisible pool. So इसको क्या बोलते हैं? Divisible pool. So cess and are not part of divisible pool. So ad hoc and advisory. So advisory nature lack constitutional mechanism in the GST council. So आप इसको बोल सकते हो this is not permanent body and advisory in nature. So there are parallel body like GST council also. So you can talk about like that. Then uh, constitutional what is that? Constitution and the local bodies delay fund allocations to the state finance commission establishment. No, this is not about state finance commission. We are talking about only the finance commission because we have clearly mentioned fiscal wheel of the fiscal federalism. So it's only about union. स्टेट की बात नहीं है. ठीक है. सो द asymmetry in terms of, yes, terms of reference, state are not giving the power in the terms of reference. ठीक है. So FCC should have given permanent status. Yes. So instead of writing all this, देखो all this way forward, you can write like that ना. Instead of making this big conclusion, you can, what you can do, way forward you can write like this, and सर one point you can write permanent body. ठीक है. और जो भी आप बताना चाहोगे सिंगल लाइन यू कैन राइट एंड देन यू कैन कंक्लूड स्मॉल 3-4 लाइन कंक्लूजन. सर ऐसे एंकर ऑफ वे इंडियन फिस्कल. फॉरवर्ड हेडलाइन हेडिंग दे सकते हैं, वे फॉरवर्ड हेडिंग देके बिल्कुल लिखना बिल्कुल दे सकते हो. यस यस. देखो क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग अबाउट द वे फॉरवर्ड, बट क्वेश्चन हियर इज टॉकिंग अबाउट, सब लोग ध्यान से सुनो, ये आंसर राइटिंग सबके लिए वैलिड है. इट इज टॉकिंग अबाउट क्रिटिकली. सो क्रिटिकली का मतलब क्या होता है? एक आपको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, एक आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, बट इट इज नॉट आस्किंग अबाउट द way forward, but we never ever end our question with a negative tone. ठीक है. So whenever you are talking about negative, but it is not asking the solution, so we can write the way forward in very brief manner. Brief manner means single points like capacity building, making it permanent body. ठीक है. And the making it, the recommendation is binding, providing state representation in the terms of reference. One word is valid here. But if question itself it is asking the solutions to the problem, in that case we have to explain in detail. समझ पा रहे हो ना? जब क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि भाई डिटेल इसमें बारे में बताओ, तो हमें डिटेल लिखना है, लेकिन कोई भी क्वेश्चंस को हम नेगेटिव टोन में एंड नहीं करते हैं, बिकॉज सिविल सर्वेंट आप प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढना है, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है. ठीक है. इसकी वजह से वी ऑलवेज ट्राई टू गिव सोल्यूशन. तो यू हैव टू ऐड ए वे फॉरवर्ड एंड keep your conclusion very short, 3 to 4 line, and whatever suggestion you are giving you can write in this format. Okay. Plus add way forward. So जो भी मैं यहाँ मैं मार्क्स दे रहा हूँ, दिस इज फॉर यूपीएससी के हिसाब से. सो ज्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको. मैं लिबरल दे रहा हूँ, बट इतना लिबरल भी नहीं होगा एग्जाम में. ठीक है. थोड़ा लिबरल में दे रहा हूँ. चलिए. तो फाइनेंस कमीशन हैज बीन कॉल्ड एज ए बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म. सो द व्हाट एस्टैब्लिश्ड what established, you have to write FC. Finance Commission established under Article 280, or you can start from Article 280 of Indian Constitution, provide for establishment of finance commissions to act as a balance wheel of fiscal federalism. You can start like that. Constitution, the finance commission act as a balancing wheel of fiscal federalism by ensuring equitable distribution of finance resource between. देखो, this is not the between, ये मैसेज की गड़बड़ी है.
जब आप ऐसे लिखोगे ये भी नहीं होना चाहिए, बिटवीन छोटा होना चाहिए लिखो ना, मैं बड़ा कैपिटल में लिखता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए ना, बट आप जब लिखोगे ऐसे नहीं लिखना है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ फाइनेंस कमीशन, वेरी गुड वेरी गुड। योर इंट्रोडक्शन इज एक्सीलेंट, बस थोड़े बहुत ट्वीकिंग का जरूरत है, गुड इंट्रोडक्शन। दिस इज व्हाट इंट्रोडक्शन शुड बी, इट शुड नॉट बी मोर देन 4 लाइन, ओके, क्योंकि यू विल नॉट गेट मोर देन इंट्रो। इंट्रो के बाद कुछ आ गया। So constitutional mandate of the, very good. This is the way you have to write. So vertical devolution, recommend distribution of the divisible pool central states. Okay, horizontal devolution, very good. So strengthening of the local bodies. Yes, measure that can be taken to augment the consolidated fund of the states. Very good, excellent. मतलब यही तो चाहिए था। ईच एंड एवरी वर्ड्स को ऐसे लिखना है, और थोड़ा फोल्ड करो दोनों साइड पे मार्जिन। ठीक है, तो कॉपी कॉपी हमेशा इट्स फॉर एवरीवन, दोज हु आर राइटिंग यू शुड आइदर ड्रॉ ए लाइन और यू कैन फोल्ड। मैं से आपको दिखा देता हूँ। मैं आई थिंक बहुत सारे बच्चे नए आए हैं, उनको इतना आइडिया नहीं है। जब भी आप कुछ लिखते हो, एक मिनट बस मैं कुछ पेजेस ला देता हूँ। ऐसे पेज लेना है, पेज लेने के बाद दोनों साइड को, चारों साइड को फोल्ड करना हमेशा, चाहे कुछ भी लिखते हो, कोई भी एग्जाम के लिए लिखते हो, हमेशा इस साइड पे फोल्ड ऐसे होना चाहिए, काफी फोल्ड होना चाहिए, ताकि मेरे को लिखने के लिए, कमेंट मिलने के लिए मिलना चाहिए। ऐसे आप मत करो कि ऐसे ऐसे लिख देते हो, मैं कमेंट कहाँ दूंगा आपको। ओके, दिस मच फोल्ड ऑन द लेफ्ट साइड, दिस मच फोल्ड ऑन द राइट साइड, बॉटम साइड में भी फोल्ड होना चाहिए, अपर साइड में भी फोल्ड होना चाहिए। या तो मैंने जो आपको दिया हूँ कॉपी, हमारा यूपीएससी कॉपी में आप लिखिए, ठीक है। देखो, स्मॉल इन्वेस्टमेंट इज वेरी गुड, सो यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। चलिए, सो एडवाइजरी रोल, सो एग्जामाइन एनी अदर मैटर, रेफर टू प्रेसिडेंट, ठीक है, वेरी गुड। ग्रांट इन आर्ट 75, वेरी गुड, एक्सीलेंट पॉइंट। अगर इस पे आपने ऐड कर देता ना एग्जाम्पल, जैसे ये वर्टिकल डिवोल्यूशन, सो 16 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड 41%, चार चांद लग जाता है। ठीक है, अगर आप थोड़े बहुत, अगर आपने एग्जांपल दे दिए, ग्रांट इन आर्ट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ग्रांट इन आर्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट, इफ यू आर जस्ट एडिंग स्मॉल स्मॉल एग्जांपल, सो दैट इज व्हाट आर्ट व्हाट इज टू योर आंसर, और अच्छा हो जाएगा। सो बैलेंसिंग, सो चैलेंजेस लिखना पड़ेगा ना यहाँ। आई थिंक व्हाट यू आर वांट टू राइट, सो यू वांट टू राइट चैलेंजेस ना, challenges of balancing, what you have to write challenges, okay। ओके ओके, पहले आप उसके बारे में लिखना चाह रहे हो, ठीक है। बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, सो रिड्यूस वर्टिकल imbalance in the state, okay, but limited revenue power, promote equitability among the state through formula based control, very good very good। So act as a natural constitutional neutral constitutional body, reducing arbitrariness in transfer, थोड़ा clearly लिखो। So ensure predictability and ट्रांसपेरेंसी इन, ठीक है, वेरी गुड, फिजिकल मैटर, वेरी गुड, गुड पॉइंट्स। सो आई थिंक व्हाई इट इज कॉल्ड फिजिकल, आई थिंक थोड़ा सा इसमें एक डायग्राम, आप देखो हर एक पॉइंट्स को एक एक जगह पे आप डायग्राम यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू कैन ड्रॉ है हाफ मून डायग्राम, आप उसको ऐसे ऐसे कर सकते हो। out of the 3 points, only one section you can write like that, so that is going to break that monotony. If you are writing continuously, so if anyone is reading, that person might feel bored, so आप एक बार हाफ मून भी बीच बीच में ड्रॉ कर सकते हो ना। जो आपने 4 पॉइंट लिखा है, मैंने वो 4 पॉइंट को हाफ मून में बना दिया, लिख सकते हो। चलिए, बहुत बढ़िया, बट यू हैव रिटन गुड पॉइंट्स। So emerging challenges, its influence. So shrinking divisible pool, very good, very good. So if you can use the data, so I think it's a 17 to 18% of the net divisible revenue आ रहा है, cess and surcharge, and that is not divisible. If you are adding this data, so that is going to add value to your answer. So rising center, what is that? Extra constitutional bodies. Okay, okay. So planning commissions, such as planning commission and नीति आयोग, what is that? थोड़ा सा बाबा क्लियरली लिखो। प्लानिंग कमीशन तो गन है, नीति आयोग के बारे में बात कर सकते हो, जीएसटी काउंसिल के बारे में बात कर सकते हो, यस। नो, इट्स नॉट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जीएसटी काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना। देखो, यू हैव सेड दैट rise of extra constitutional body, but here you have written the GST council. You can say existence of parallel bodies, existence of parallel body having similar jurisdiction, so then this point is going to be valid, existence of parallel body with similar jurisdiction।
with same power. So growing state level debt burden. Okay. So 5 year period, 5 year periodicity reduce the इकोनॉमिक शॉक्स. ओके पैंडेमिक. आप कितने पेज लिख दिए बाबा? 3 पेज. ओके 3 पेज ठीक है. ओके वेरी गुड. सो केस स्टडी 15 फाइनेंस कमीशन दैट स्टेट रिसीव 41% डिविजिबल पुल. ठीक है वेरी गुड. State express concern that declining transfer, rising cess and surcharge. Yes, very good case study, very good. So I think this example you can support whenever you are talking about declining in the divisible pool. Whenever you are writing, I think you have written that this here you can give example that can support, or you can write in this point below. You can write a case study or support or examples. You can explain that also. So next is okay, way forward, very good. So enhance the coordination and finance commission of GST council. Okay. So power, what is that? So provide greater नहीं हैंडराइटिंग सही है थोड़ा. Flexibility. Okay. So strengthen the binding nature of the transparency and transfer mechanism. थोड़ा सा बाबा क्लियरली लिखना, क्योंकि देखो वो नहीं पढ़ेंगे ऐसे. और यहाँ आई थिंक वे फॉरवर्ड इट इज आस्किंग और नॉट आस्किंग. सो ठीक है, देन 3 पॉइंट इज ऑल्सो ओके. इफ वे फॉरवर्ड इज नॉट आस्किंग, 3 पॉइंट इज ऑल्सो ओके. सो फाइनेंस कमीशन रिमेन द cornerstone of India's fiscal federalism. However, prescribing its what is it? मुझे नहीं आ रहा है बाबा. effectiveness, cornerstone effectiveness. ये this one. No, this one. So influence. Sorry. Preserving. ये क्या है प्रभात? आपका है सर आपका किसका है नहीं ये? सर किसी और. ओके आई थिंक ये हमारा अनुराग का है. Designed to emerging fiscal reality while upholding the constitutional spirit and cooperative federalism. Good, very good है. बट थोड़ा सा आप अभी लिखने में जल्दी में हो रहा है, बट थोड़ा क्लियरली लिखना है. मैंने आपको बताया था ना, whenever you are writing, try to write first 2-3 words and last 2-3 words. अंदर का जो होगा मैं चले जाएगा, लेकिन देखिए जैसे रिमेन पढ़ते हैं RENS, ये अगर मुझे समझ में आ गया, मैं मेरा माइंड गेस करके समझ जाएगा दिस वर्ड इज कॉल्ड रिमेन्स. ओके. जैसे कमीशन COAND, सो हमें हमेशा पढ़ते हैं स्टार्टिंग वर्ड एंड लास्ट वर्ड, बीच का नहीं पढ़ते हमारा माइंड. दिस इज व्हाट हैपेंस. सो मेरा माय हैंडराइटिंग वाज आल्सो नॉट गुड, but I have developed that skill, so I have to remember I have to write starting two words in a good way and towards good way. Beach ka you can just do whatever way. Okay. Anurag, I think this is your copy, I think na Anurag. Very good answer, actually very good answer.